छोटे छोटे व्हील्स होते हैं, हम वही हैं। आज प्रस्तुत यहाँ हर व्यक्ति उस बड़ी मशीन का एक छोटा सा नट या बोल्ट है। हमें अपने ग्रीसिंग करते रहना है, हमें अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है ताकि ये पूरा मशीनरी अच्छे से आगे बढ़े, स्पीड से बढ़े और सफाई से एक उदाहरण बने पूरे भारत में। हमारा जो विश्वविद्यालय है एक उदाहरण बने। जो ये कैंपेन है इसको मुख्यतः जिन टॉपिक्स में बांटा गया है सीबीसी की तरफ से, उसको हमने 4 मुख्य टॉपिक्स में बांटा है और हमारे स्पीकर्स जैसे सर ने बताया स्पीकर्स हैं हर टॉपिक पे। तो पहला टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स, जिसके लिए मैं हमारे एस्टेट ऑफिसर को रिक्वेस्ट करूंगी हमें थोड़ा सा इसके बारे में अवगत कराएं। तो सर आप वहीं से बोलना चाहेंगे या स्टेज पे? इनका स्वागत कीजिए क्योंकि अपने हेल्थ के इतने बुरी स्थिति में होकर के भी आज हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। कोई दिक्कत नहीं, जब आ ही गए तो इतनी तो संभाले रहेंगे हमें लोग। आप सबको मेरा सबसे पहले नमस्कार। My most respected colleagues on the dais, Professor Balram Pani sir, Professor C. Prakash Singh, who is not only the director South Campus for me, but a friend for a very, very long time by now. I know him from my college days when I was just, there, and since then I happen to know him. My most dearest respected registrar and the finance officer. I first take this opportunity to thank Madam Meenakshi Sahai ji for giving me this opportunity to be here to talk on property management and asset management. You see, while I was thinking about this and the registrar has just set the floor and said something, our joint registrar is also with us from the States, that he suggested something and we wanted to implement it. Again, the whole question of bureaucracy comes to play a major role. I am not here to, talk on various aspects of how things happen and why time is taken, because each one of us, as rightly pointed out by Madam Meenakshi, we are the nut bolts and the parts of the great big engine which is the asset, which is the University of Delhi. Each one of us, before coming to the topic of managing property, we have to understand, as rightly said by all the dignitaries of the dais, that it is the inner conscience. And when we talk about the inner conscience, I believe that self-praise is no recommendation. But I remember that while I was with this university as part of administration, one fine day it came on my own that I should take interest. I should know where and what this university is all about. And once you start thinking on those lines, you always get to connect and you always get to find out people. And that is how Registrar sir was kind enough one fine day to say that our property is in a mess and I wanted to take care of it. Initially I was a little reluctant that what will I do and how it can be taken care of, but he said that I am with you, do whatever you want. And that is how things began, and I am here today. The very topic, though it is not related to my subject, on property management and asset management. I know all of us, as again Madam Meenakshi Sahai was pointing out, all of us know about vigilance. हम सब सतर्कता के बारे में जानते हैं, हम सब सतर्क रहना भी जानते हैं। अभी अगर हमें स्टेप से उतरना हो तो हम बहुत सतर्क रहते हैं। उसी तरह अपने दिनचर्या में भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है, अपने कार्यस्थल पर भी सतर्क रहने की जरूरत है। और हम किस तरह से सतर्क रहेंगे, वही हमारे कॉन्साइंस की बात आती है कि हम क्या ऐसा करें, कैसे अपनी डिलिजेंटली ड्यूटीज को डिस्चार्ज करें जिससे कि हम ये कर पाए।
तो आज सुबह सुबह मुझे नहीं पता था कि प्रोफेसर AK सिंह यहाँ ऑडियंस में होंगे, तो मैं मैनेजमेंट सोच रहा था कि मैनेजमेंट क्या होता है। So management according to me is nothing but art. It is skill, it is your action, it is your values, it is your ethics. And if you imbibe all of these in your day-to-day affairs, many of the things are taken care of. We really do not have to worry. But today, when we talk of property management, then what do? I am sitting in such a beautiful hall here. Do we have any history that how did this property come to us? It will be too difficult. While I dig down on the records to find out this, and that's the most important thing, is the documentation. And documentation of each of the property of University of Delhi is so important today for us to know. हम सबको यह जानना चाहिए कि कौन सी कागज से हम यह प्रूव कर पाएंगे कि यह बिल्डिंग, यह हॉल, यह जगह हमारी। आप सब जानते हैं, हम सबके नाम प्रॉपर्टी या तो पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है या हम खुद खरीदते हैं। वहां तो हमें पता होता है कि हमने ये परचेज की है या ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप से आया है या हमें विल के थ्रू मिला है या हमें ये डोनेशन के थ्रू मिला है या यह हमारा गिफ्ट है। पता हमें सब कुछ सबको, लेकिन किस तरह से हम ये इंश्योर करें कि सरकारी रिकॉर्ड में भारत सरकार के हर विभाग, जो राजस्व डिपार्टमेंट होता है, जिसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट हम कहते हैं, जो कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में होता है, वहां क्या यह रिकॉर्ड दिल्ली विश्वविद्यालय के नाम है या नहीं है, क्या हम उस प्रॉपर्टी का टैक्स टाइम पर पे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्या पानी और बिजली का कनेक्शन अगर उस प्रॉपर्टी पे है तो उसका पेमेंट नियमित तौर पर हो रहा है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रजिस्ट्रार साहब या डायरेक्टर साहब या डीन ऑफ कॉलेज या ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब की नहीं, ये हम सब की। क्यों? क्योंकि हम सब इसका हिस्सा हैं। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ऐसा मैंने देखा है कई सालों, मतलब ऑलमोस्ट 50 इयर्स पीछे जाके भी मैंने देखने की कोशिश की है रिकॉर्ड्स को। अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं है, जिसके कारण हमें बहुत समस्या हो रही है इस वक्त। किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में, चाहे हम हमारी बताना अगर आपको शुरू करूं तो काफी प्रॉपर्टी है। हम अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस की ही बात करें तो यह कैंपस जो है 133 एकर्स की कैंपस है, जो 5 किलोमीटर की रेडियस है। कैसे आया? ये एक्सटेंडेड कैंपस था, पूरा मॉडल टाउन तक से पहले पुलिस लाइन तक ये कैंपस एक्सटेंड करता था। विजयनगर, हडसन लाइंस, मुखर्जी नगर सब इस विश्वविद्यालय के हिस्सा होते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता गया, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स बदलती गई, वैसे वैसे हम जमीन छोड़ते गए और उसके एवज में हमें कई जगह और जमीन दी गई, जिसका हम आज सदुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सदुपयोग करने के संदर्भ में जो सबसे जरूरी बात है वह यह है कि हम प्रत्येक अपनी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से करें कि जब किसी को जरूरत हो, अगर रजिस्ट्रार साहब अपने इंटरनल कॉल से कॉल करके किसी चीज को डिटेल्स पूछ रहे हैं तो उस समय हम फाइल ढूंढना शुरू करें। इस चीज से हमें बाहर आने की जरूरत है, इस चीज को समझने की जरूरत है, क्योंकि रजिस्ट्रार happens to be the custodian of the states. We are just, an enacting authority, but he is the custodian of the states. Every property, now I am ensuring that जितनी भी दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रॉपर्टी हैं, जो धरोहर है हमारी, उसको हम यह कोशिश करें कि उसका रिकॉर्ड पहले प्रॉपर हो, उसके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हो और वो डॉक्यूमेंट्स सेफ में रखे जाएं, वो डॉक्यूमेंट्स स्कैन हो और उन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ हम प्रॉपर्टी टैक्सेस सभी प्रॉपर्टी का टाइम पर दें, कहीं कोई हमसे भूल ना हो। यह सारे बिंदुओं पर हमें ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। बातें कई सारी हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट, जो मुख्य विषय से संबंधित बात है वह इन पहलुओं से संबंध रखता है। क्यों? क्योंकि हम लोग कार्य निष्पादन कर रहे हैं और कार्य निष्पादन में क्षमता बहुत जरूरी होती है। तो मैं बार कहता हूं कि हमारी 5 fingers are not equal, but each of the fingers has its own importance. तो हमें ये समझने की जरूरत होगी। हम ये नहीं कर सकते कि कल को हम किसी प्रॉपर्टी के संदर्भ में डील कर रहे हैं और वहां से मुझे बाहर से यह सूचना मिले कि नहीं, हमें तो सारी इंफॉर्मेशन इस प्रॉपर्टी की आ रही है,
तो कहीं ना कहीं वह हमारे ऊपर, आप सबके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि हम किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, किस तरह से अपना कार्य का निष्पादन कर रहे हैं। तो वहीं एक प्रत्यक्ष बात जो मैंने इस पूरे अंडरस्टैंडिंग में समझने की हमें जरूरत है, वो ये है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम कितनी अकाउंटेबल और हम किस ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करें। हम सब जानते हैं, जैसा शुरू में जब इन्होंने शुरू किया मैडम ने तो कहा कि हमें इन चीजों को बार बार याद करने की जरूरत होती है। आज हम सतर्कता अभियान के अंतर्गत याद कर रहे हैं, अदरवाइज भी डे टू डे हमें याद करने की जरूरत होती है कि हम किस तरीके से जब किसी विषय पर या किसी भी अपने कार्य पर काम करते हैं तो हमें क्या करना है। और वहां अगर हम कार्य निष्पादन ठीक करेंगे तो हम खुद ब खुद अकाउंटेबल रहेंगे, खुद ब खुद रिस्पॉन्सिबल रहेंगे और ट्रांसपेरेंसी तो होनी ही चाहिए। हमें क्यों ऐसा ना हो कि इस हॉल में बैठे हुए हमारे जितने स्टाफ सदस्यगण हैं उनको विश्वविद्यालय के धरोहर के बारे में जानकारी है। और धरोहर मानने की बहुत बड़ा शब्द, धरोहर सिर्फ प्रॉपर्टी से संदर्भ नहीं रखता और भी कई विषयों से संदर्भ रखता। लेकिन हमारे सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छे से, जो डायस पर इस वक्त विराजमान हैं, उन्होंने काफी अच्छी बातें बताई हैं। उस क्रम में हम सिर्फ, चूंकि रिकॉर्ड कीपिंग पर हमारे अदर कॉलीग्स बोलेंगे, इसलिए मैं रिकॉर्ड कीपिंग पर नहीं जाना चाहता। मेरा मेजर फोकस जो है वो डॉक्यूमेंटेशन एस्पेक्ट्स पे है। और जब डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन हो जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं जो है सो कि सारे कागजात को सही तरीके से रख पाएंगे। आज की डेट में मैं रजिस्ट्रार साहब के आशीर्वाद से बता सकता हूं आपको कि हमारी कौन सी प्रॉपर्टी कहां है, कितना प्रॉपर्टी है और उसकी करंट स्टेटस क्या है। इसके लिए मुझे किसी फाइल को देखने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति, हर स्टाफ, चाहे वो स्टेट से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, उसको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि हम जिस कार्यालय में बैठे हैं, जिस कमरे में बैठे हैं, वो कैसे है और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैडम मीनाक्षी साहब का और पूरे उनके टीम का कि आपने मुझे यह मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच एंड थैंक्स टू द ऑडियंस फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी। थैंक्स। थैंक यू सर। अपनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद यहाँ आकर के हमें चीज़ों के बारे में, हमारे प्रॉपर्टी, यूनिवर्सिटी के प्रॉपर्टी के बारे में अवगत कराने के लिए और ये हमें एहसास दिलाने के लिए कि हम कितनी बड़ी धरोहर के मालिक हैं। हमें इस बात पे नाज होना चाहिए और हमें इसे समेट के, इसे संभाल के रखना है। और प्रक्रिया रजिस्ट्रार सर ने भी बताई, विपिन तिवारी सर ने भी बताई, जहाँ जहाँ हम सबसे संभव हो हमें इसमें अपना अपना योगदान देना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, विपिन तिवारी सर। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू ऑन माय बिहाफ एंड यूनिवर्सिटीज बिहाफ आल्सो फॉर दिस wonderful speech that you gave, wonderful talk that you gave. The next topic would be record management and updation of guidelines and circulars. I would request, call upon Shri Jayachandra ji to come up on stage for this topic and just brief us about the issues involved. Thank you so much. Let's have a big hand for Jayachandra ji. Respected Dean of Colleges, respected Director South Campus, respected Registrar Sahab, respected Finance Officer Sahab, respected Deans in the audience, senior faculty members, distinguished guests, my colleagues in administration. Namaskar.
As we all know that we have assembled here today for inauguration of this Preventive Vigilance campaign under the guidance of our Honorable Vice Chancellor and Honorable Registrar. Here I must say that the value of the program is very significant. The program is held in this historic convention hall of the Vice-Regal Lodge on the centenary year of this university. There could not have been a better venue for this particular program. It shows the positive intent of the university in taking forward the measures of preventive vigilance and an efficient administration. University of Delhi has always remained in the forefront of the initiatives taken by the Government of India from time to time on various areas, and the very recent Har Ghar Tiranga initiative is one of them. Now coming to the topic of record management and updation of various guidelines, circulars and manuals as has been given to me by our Joint Registrar of Vigilance, Madam Meenakshi Sahai. I'd like to mention that these are the two most important cornerstones of our administrative discourse in our day-to-day administration, and they are just like the bricks of a building. Oft we do not discuss about them in our day-to-day administration, but we must take due cognizance of them in day-to-day administration. It is important. I'd like to touch upon a few important and relevant aspects of record management and the continued endeavor of the university in this direction. When you talk about preventive vigilance, what it means adoption of various measures to improve systems and procedures, I repeat, systems and procedures to eliminate or reduce corruption. Therefore, we need to adopt adequate measures in this direction to be able to follow this. When you talk about record management, I was just wondering, what is the definition of a record? And we could find the definition of a record from the Public Records Act 1993. And the definition is also an inclusive definition. Now, a public record means any document, file, a facsimile document maybe, a microfilm, a register, any material held in the computer, among others. Basically, record management involves observance of record life cycle, which may be a file or a register or any other document. I'm getting a little technical on this because I can see my friends in the administration, and I'll be happy if these initiatives are as already taken by them, but they are taken a little more vigorously now onwards to be more particular. So basically, record management talks about record life cycle. And record life cycle is what? Basically, when a record is created, when a document is created, suppose a file is created. And when a file is created, we deliberate upon that particular file, and during the time of its deliberation, we keep a constant watch on that particular document. After that, when the file actually moves on the horizon of our discussion, then it goes into a kind of an active phase of preservation, so that we can refer the file back on some times or the other. And after that, what happens? It goes to a passive phase of preservation in some algorithm, and we tend to forget about that. Here is the biggest challenge. In document cycle, the important part is that when it goes from the active phase to inactive phase of deliberation, how we are keeping the records, how we are maintaining the records. Where after this inactive phase, a phase will come when we have to take a decision whether that record has to be preserved historically or the record has to be preserved for a particular time frame. And this particular decision has to be taken on the basis of a document which is called record retention schedule. I think all of us are quite aware of it, and Registrar Sir has also mentioned it in his talk. So, most important thing is the record retention schedule to be followed for life cycle of a record. When we check that record life cycle with the particular year, how many years the record has to be maintained, then we decide whether to keep the record for a particular period of time or to weed it out. Now, when we weed out a record, do we weed out the records just like that? In bundles? No. We need an inventory of those records, those documents.
For making an inventory, I'm going a little back to forward, we need numbering. So the document has to be numbered first with a uniform, a well thought of numbering system. And with the help of this numbering system, we prepare the inventory of documents in a particular office or a section or a department and anywhere. And then what happens? When we actually make an inventory of those documents, then we take a call whether the document has to be kept permanently or for 5 years or 10 years or 15 years or whatever it is, whatever has been decided. And whenever the time period has come, we will actually read it out as per our procedure. What will happen that if we do not have a proper file numbering system, it creates the first hindrance in the cycle. The moment we start deliberating on a fresh receipt or a paper under consideration, as we say when a new paper comes to a section or an office, in a gadda, and put a note sheet on it, and just put a diary number, take a decision, and action is over, and we forget about the document. How to make an inventory of such kind of a documentation. So it is very, very important that we actually document it in the form of a file or a register, whatever it is, depending upon the area on which the section of the office is working. Now, in this context, it is important to understand that when we do this exercise, we need to also understand that this is important in an era of RTI. Because if a record has actually outlived its life and we are still holding that record, and someone requests information under the RTI Act, we are duty bound to provide that. And the record may be in a very disjointed manner, so we'll be finding it very difficult to really put it at one place and provide. So it will create an embarrassment for us actually while holding such a record. But one thing is very important, while reading out the records, we need to be responsible enough to see that no record is weeded out, which is otherwise not required to be weeded out. So it's a mindful exercise and not a clerical mindless exercise. We need to understand that. Basically on this record management and documentation, at times we are very conservative. We want to keep all the records with us, न जाने कब उसकी ज़रूरत पड़ जाए. जैसे कि एक कहानी है, शायद हम सबको पता है कि एक साहब को एक बार महसूस हुआ कि उनके दफ्तर में बहुत सारे रिकॉर्ड इकट्ठे हो गए हैं, फाइल इकट्ठे हो गए हैं. तो उन्होंने अपने स्टाफ को डायरेक्शन दिया कि इन सारे रिकॉर्डों को विड आउट कर दी जाए, जो ज़रूरत है उसको रखें और बाकी विड आउट करें. उनके लिए एक इन्वेंटरी बनवाई गई और उसके बाद ये तय हुआ कि ये सारे रिकॉर्ड विड आउट होगा. तो जैसे ही विड आउट का दिन और क्षण तय हुआ, तो उससे 1 घंटे पहले उन्होंने अपने पीए को बुला के बोला, जरूर सारे रिकॉर्ड को आप विड आउट करें, लेकिन एक फोटोकॉपी जरूर रख लीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में कभी जरूरत पड़े तो उसको हम इस्तेमाल करें. तो वैसा करके हम रिकॉर्ड मैनेजमेंट ना करें, हम लोग रिस्पॉन्सिबली इसको करें. और रिकॉर्ड मैनेजमेंट जब हम सही तरीके से सही कायदे से करते हैं, उसके सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, कम रिकॉर्ड होता है और एक्टिव रिकॉर्ड होता है, तो उसको हमें मेंटेन करना आसान होता है, रिट्राइव करना आसान होता है, लीन एंड क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन चलता है. रजिस्ट्रार साहब खास करके कई बार हम सबको ये जो है नसीहत दे चुके हैं कि हम इसको देखें और इसको समय समय पे ऐसे रिकॉर्ड का विड आउट करें. लेकिन लेथार्जी की वजह से हो या और कार्य की वजह से हम लोग कई बार उसको देख नहीं पाते, लेकिन समय है कि इसको हम देखें और इस पे आगे बढ़ें. और जहां तक सर्कुलर्स, मैनुअल्स और इत्यादि का अपडेशन की बात है, इसमें ऑलरेडी यूनिवर्सिटी बहुत सारा अच्छा स्टेप ले रहा है. अच्छा, वैसे मैं एक बात बता दूं कि ये रिकॉर्ड मैनेजमेंट के ऊपर यूनिवर्सिटी के पास ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट है जो 2011-12 को बना था और सारे यूनिवर्सिटी के सेक्शन ऑफिसेस, कॉलेजेस को वो डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हुआ था फॉर रेफरेंस एंड कंप्लायंस. और इत्तेफाक से उस डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग में मेरे भी कुछ योगदान रहे थे. तो उस डॉक्यूमेंट को अगर हम थोड़ा सा एक बार और देख लें तो हो सकता है फाइल नंबरिंग सिस्टम करने में हमें थोड़ा सा और मदद मिल जाएगी. जहां तक रिकॉर्ड की अपडेशन की बात है, ये बहुत जरूरी इसलिए होता है मैनुअल्स अपडेशन करना, रूल्स अपडेशन करना, क्योंकि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है जब भी कोई मैटर को डिसाइड करता है या सबमिट करता है तो रूल्स रेफर करता है. अगर वो सही रूल और एकदम सटीक तरीके से उसको प्रेजेंट नहीं कर पाता तो उसमें फैसला करने में कई बार बहुत ही दिक्कत होती है. तो इसीलिए सही और सटीक रूल को तभी वो कर पाएंगे और पब्लिक डोमेन में भी डाल पाएंगे जब वो अपडेटेड होगा. तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने अपने सेक्शन, अपने अपने विभाग या अनुभाग में जहां पे भी
इसके कार्रवाई चल रहे हो, उसको एक एक डॉक्यूमेंट को लें और उसको अपडेट करें। अपडेट करना कोई बहुत कठिन काम नहीं होता है। जो रेलिवेंट एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रेजोल्यूशंस होते हैं, उसको काउंसिल ब्रांच समय समय पे सभी सेक्शनों को अपने आगे की कार्रवाई के लिए भेजते हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा देखें और उसको अपने अपने रिकॉर्डों को ठीक करें और अपडेट करें। इस संदर्भ में एक बात और कहना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है उसके जरिए हम समय समय पे बहुत सारी सूचनाएं हम लोग पब्लिक को देते हैं और अपडेटेड रहता है वो सूचना, जहां तक मेरा नॉलेज है। लेकिन उसको थोड़ा और आगे बढ़ाने की जरूरत है, थोड़ा और उस पर मेहनत करने की जरूरत है। मैं आशा करता हूं कि ऐसा हम जरूर करेंगे आने वाले दिनों में और इसमें जरूर हमें सफलता भी मिलेगी। और संजीव सिंह जी हमारे साथ ही बैठे हैं, उनकी मदद हमें ऑलवेज मिलते रहते हैं। और विश्वविद्यालय एक काम और भी करता है जो कि बहुत जरूरी होता है, दैट इज ट्रांसपेरेंसी ऑडिट। और हर साल संजीव सिंह जी जो हमारे डायरेक्टर